Hi guys, welcome back to my channel. Welcome to another video. If you're watching for the very first time, hi, my name is Arpita and I'm a beauty fashion lifestyle content creator. और आज की वीडियो में मैं रिव्यू करने जा रही हूँ लैक्मे का एक्स्ट्राऑर्डिनरी एरी लिप मूस एंड ये बेसिकली एक पुराना प्रोडक्ट है बट द ब्रांड हैज रीलॉन्च्ड इट विद देयर मिनी कलेक्शन. सो हम लोग इसकी प्राइस के बारे में बात करेंगे, क्वांटिटी, क्वालिटी या फिर फॉर्मुलेशंस में भी कुछ चेंजेस है कि नहीं. इफ यू वांट टू नो कि प्रोडक्ट कैसा है और एक्चुअल में आपको प्रोडक्ट खरीदना चाहिए कि नहीं, then keep on watching this video till the end. And if you're new to my channel, then please don't forget to subscribe and hit the little bell icon to never miss any update. So without any further ado, let's get started. क्वांटिटी, एमआरपी ये सब डिस्कस करने से पहले लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट. सो पैकेजिंग में अगर आउटर पैकेजिंग की बात करूँ तो दिस कम इन दिस कार्डबोर्ड सॉर्ट ऑफ पैकेजिंग जहाँ पे आपको प्रोडक्ट का सारे यूएसपीज क्लियरली विजिबल मिलते हैं, द नेम ऑफ द शेड्स, एमआरपी, एक्सपायरी डेट्स एंड ऑल ऑफ दैट. और इसी के साथ इसका लुक भी बहुत ही प्रीमियम है लाइक एवरी अदर लैक्मी पैकेजिंग. आई ऑलवेज गिव 10 on 10 to Lakme for the packaging. So I think outer packaging is pretty on point. Now if I talk about the inner packaging or the container of the product, it comes in this small little glass bottles which has this cute heart shape in it, जो कि इसका जो फुल साइज का प्रोडक्ट है उसमें भी ये डिज़ाइन नहीं किया गया है. सो दिस इज़ वेरी क्यूट एंड ऑल्सो द रीज़न वाई दे हैव रीलॉन्च दिस प्रोडक्ट इन अ स्मॉलर वर्जन, क्योंकि ब्रांड के हिसाब से दे वांट समथिंग विच इज़ लाइक ऑन द गो या फिर आप पॉकेट में कैरी कर सको. कोई छोटा चीज़ में भी ये घुस सकता है. यू कैन कैरी इट ऑन योर जीन्स पॉकेट्स, ऑन योर इवन स्मॉल वॉलेट्स. सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी कन्वीनियंट product if it comes to the packaging and everything, and it looks pretty cute also. Now if I talk about the shade range, this particular product has been launched in 10 different shades which are obviously targeted to Indian skin tone, और उसमें से मेरे पास 4 different shades available हैं. इसमें से मेरे पास एक न्यूड है, एक पिंक न्यूड है, एक मॉव है और एक रेड कलर है. मैं इसको स्वॉच करके डेफिनेटली आपको दिखाऊंगी कि फॉर्मूला कैसा है. नाउ इफ आई टॉक अबाउट द कंसिस्टेंसी ऑफ द प्रोडक्ट, इसका एक फॉर्मूला मूसी फॉर्मूला है विच इज़ लाइक अ प्राइमर बेस्ड फॉर्मूला, जो कि मोर और लेस लैक्मी के लिपस्टिक में वेरी कॉमन है अपार्ट फ्रॉम दैट बुलेट लिपस्टिक्स. सो दैट इज देयर. अनदर थिंग दैट आई रियली लाइक टू टॉक अबाउट इज द प्राइस पॉइंट. दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज 1.8 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट एंड दिस retails on the MRP of 499. इसका I think full size जो है that comes around 7 or 800 if I'm not very wrong. But इसका जो smaller size है, I am very surprised कि इतना छोटा product का they are selling it for 499. MRP 499 है. ऑफर्स में जाके आपको वही 450-400 का मिल जाएगा अगर आप नाइका, Amazon या फ्लिपकार्ट से लेते हो. नॉट श्योर कि फ्लिपकार्ट में कितना अवेलेबल है. Now one thing that I really don't understand about this particular product is the MRP, because 499 for 1.8 gram of product is I think too much, specifically from a brand like Lakme which is a drugstore product. So obviously the price point is bit higher than usual. Now we have talked a lot about the product itself. It is the time to try and test this out. First I will do a hand swatch over here and then I will swatch it on to my lips. We will be talking about how comfortable it is, whether it's getting smudged out or not, all of that. So let's go. So the first product that I just swatched right now is called the Crimson Sky. Now इसका जो consistency है, the consistency is very creamy. At the same time it has this mattifying effect. Now let's quickly swatch it onto my lips. So if I talk about the color pigment, the pigment is on point, but one thing that I really felt off with this shade is that it looks pretty nude, but once I apply it does not look like any nude shade. So if I talk about the product feels pretty light onto my lips, but it has a very moisturizing effect. Despite of this being a liquid lipstick, this has cocoa butter, so it keeps my lips moisturized and hydrated at the same time. The colors are on point, like this one also a vibrant
purple shade, which is called the Mauve Mischief in the shade number 205. This also looks pretty on point, but this is a winter shade, I would say, not suiting with my skin tone for summers. Now I'll be trying this shade called Chocolate Temptation in the shade number 304. This is basically a brown nude shade. Honestly, I love wearing nude shades because I don't know, that goes well with my skin tone, but unfortunately this shade is not complimenting me enough, but I really love the color. Kudos to that. Now moving on to the next shade, which is a red pigmented shade, and I love red pigments or red lipstick when it comes to Lakme, because they definitely do their job. This shade is called Dark Cherry in the shade number 103. This looks very cute and aesthetic at the same time and is complementing my skin tone. Now let's try how smudge proof this is. I'll do a kiss test, and you can see this is smudging out very little bit, but it does have good pigment onto it. So yeah. So I really hope you guys like this video and find it helpful, and if you do, then please don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel for more such contents like this. And also अगर आपको ये product अच्छा लगा है and you want to get your hands on this particular product, then don't forget to go on to my description box. वहाँ पे जाके आपको product का link definitely मिल जाएगा. That's it for the video guys. I'll see you everyone on the next video.